Hello students, so today we will see the next topic of goodwill, that is your calculation of hidden goodwill. Now the question comes, what do you mean by hidden goodwill? Hidden goodwill का मतलब क्या होता है? Sometimes what happens in the questions, goodwill has not been given. Okay, so when goodwill has not been given in the question, that means we are required to calculate the amount of goodwill. So such goodwill is known as a what? Such goodwill is known as hidden goodwill. ठीक है? So that means we can say that sometimes goodwill is not given. Goodwill is not given in question. ठीक है, क्वेश्चन में हमारा गुडविल दिया हुआ नहीं रहेगा. सो देन दैट मीन्स दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन इज नोन एज, दिस सिचुएशन इज known as your hidden goodwill. Okay, is known as hidden goodwill. Now the question comes, how to calculate the hidden goodwill. So that means hidden goodwill must be calculated on the basis of new partners capital account. Okay, so new partners capital account would be taken as the base. Okay, and then we are required to calculate the hidden goodwill as well as profit of the partners. Okay, so goodwill is calculated. Goodwill is calculated on the basis of, goodwill is calculated on the basis of new partners capital account, new partners capital account. Okay, taking as base, उसको हम base मान के चलेंगे, taking as base and profit sharing ratio of the partner, profit sharing ratio of the partners. उसके बेसिस पे we are required to calculate the hidden goodwill. ठीक है, so now let us see one example. Suppose we can say that A and B are partners. Say A and B are partners. ठीक है, contributing capital, say contributing capital of rupees say 1 lakh and rupees 2 lakh respectively. ठीक है, A and B partners से उनका कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 lakh and 2 lakhs. Now C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner, say for 1/5 share. C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 1/5 share. Okay, and capital contributed by C say is rupees say 1 lakh. So what is the capital contribution ratio for C? Is rupees 1 lakh. Okay, so calculate the value of hidden goodwill of the firm. ठीक है, hidden goodwill of the firm, and also pass necessary journal entry, also pass necessary journal entries. Okay, and suppose profit sharing ratio, if old profit sharing ratio has been given 3:2. Old profit sharing ratio क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3:2. So now in this question we could able to see the capital contribution of A and B are given. ठीक है, C का भी कैपिटल दिया हुआ है and C share is given how much? 1/5 share. Okay, now goodwill has not been given. Okay, so that means we are required to calculate the hidden goodwill. This is the situation of hidden goodwill. Now how to calculate the hidden goodwill? Let us see the solution. So as I have said that it would be calculated on the basis of new partners capital account, which would be taken as base. तो C का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर शेयर इज 1/5. तो C share of profit, C share of profit is equals to how much? 1/5.
Okay, and how much C has contributed? Rupees 1 lakh. That means for 1/5 share, capital of C कितना है? Capital of C is equals to rupees 1 lakh. Okay, so that means total capital of the firm, we are required to calculate the total capital of the firm, and that will be taken on the basis of C capital. C का capital कितना था? 1 lakh into reciprocal of C share of profit. Reciprocal of C share of profit मतलब 1/5 है, इसका just reciprocal हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/1. So how much is the total capital of the firm? Total capital of the firm is your rupees 5 lakhs. Now we are required to calculate the amount of goodwill. So hidden goodwill. How to calculate the hidden goodwill? So hidden goodwill is equals to total capital. Total capital कितना था? 5 lakhs minus capital contributed by all the partners. ठीक है, तो capital contribution कितना था आपका? A का कितना है? 1 lakh प्लस B का कितना था? 2 lakh प्लस C का capital contribution कितना है? 1 lakh. That means your total capital of the firm, उसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस टोटल कैपिटल contributed by all the partners including C. कितना हो गया ये? This is a 4 lakhs. 5 lakh minus 4 lakh, that is a 1 lakh. So this is the 1 lakh is the goodwill of the firm. So here we are required to calculate the hidden goodwill of the firm. So hidden goodwill of the firm we have calculated how much it is? Rupees 1 lakh. Okay. Now we are required to pass the journal entry. So this is the goodwill of the firm. Now we are required to calculate the C share of goodwill. So new partner share of goodwill. New partner का share कितना है? 1/5 है. So 1/5 into how much? Into 1 lakh. So how much is the amount of goodwill which is to be brought in by C? Rupees 20,000. ठीक है. So now in this question it has not been given that C has brought in his share of goodwill. नहीं दिया हुआ है. That means we will assume that new partner has not bring his share of goodwill. So already we have discussed the journal entry. So what will be the journal entry? It will be adjusted. Goodwill will be adjusted from new partner's current account. So what will be your journal entry? C current account would be debited. C current account would be debited. How much? 20,000. Okay. To A capital account. To A capital account and to B capital account. ठीक है. Now the question comes that goodwill must be distributed in sacrificing ratio. So in this question only old ratio has been given and nothing has been given. Only old ratio has been given और C का शेयर दिया हुआ है. ठीक है. That means in this situation either we can calculate the sacrificing ratio by computing the new profit sharing ratio. Then what is the formula for sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio. और अल्टरनेटिवली क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? वही सेम 3:2 आएगा. कैसे? बिकॉज इफ नथिंग हैज बीन गिवन, ओनली द न्यू पार्टनर शेयर हैज बीन गिवन, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो वुड बी कंसिडर्ड एज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है. सो 20,000 मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? इन द रेशियो 3:2. ठीक है. सो 3/5 into 20,000. So that is your 3/5 into 20,000. So how much it will be? This will be your 12,000 and this will be your rupees 8,000. That is a 2/5 into 20,000. Okay. Narration: being goodwill adjusted in sacrificing ratio. That is in which ratio? In sacrificing ratio has been considered as 3:2. Okay. So this is how we are required to calculate the hidden goodwill. So now let us solve the next question from the board. As you can see, following is the balance sheet of A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018. Okay. Now you can see liability has been given, A capital, B capital has been given 3 lakh, 2 lakhs. Reserves, profit and loss account and sundry creditor. Similarly, assets में क्या क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर. ठीक है.
they admit C as a partner. नया पार्टनर कौन आया? C आया with 1/4 share in the profit of the firm. C का शेयर कितना है? 1/4. C brings rupees 3,20,000 as his capital. Give journal entry for goodwill. Now in this case, C amount of goodwill has not been given. That means it is the situation of hidden goodwill. So first of all, we are required to prepare the working notes for the calculation of hidden goodwill. ठीक है, तो देखेंगे हम C का शेयर कितना था? 1/4 शेयर. ठीक है, तो solution here we can do working notes. ठीक है, for calculation of hidden goodwill. For calculation of hidden, ठीक है, गुडविल. सो सबसे पहले हमको क्या करना है? हिडन गुडविल निकालना है. सी का शेयर कितना था? 1/4 एंड सी का कैपिटल कितना? 3,20,000. दैट मीन्स फॉर 1/4 शेयर सी कैपिटल इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज 3,20,000. ठीक है, 1/4 शेयर के लिए. सो देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. सो टोटल कैपिटल ऑफ firm would be how much? 3,20,000 into reciprocal of C. Share कितना है? 4/1. This will be how much? This will be rupees 12,80,000. ठीक है. Now you see in this question not only the capital account has been given but also the reserves has been given. ठीक है, तो जब कभी भी रिजर्व्स दिया रहेगा तो उसको भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, so now in this question reserves and profit and loss account has also been given. ठीक है, और यहाँ पर advertisement expenditure, so 20,000 has been given. So advertisement expenditure means what? This is your fictitious assets, or you can say that would be considered as your accumulated loss. Okay, हम assume कर सकते हैं वो. So this reserves, remember accumulated profit will also be considered while calculation of goodwill, including your what? Including your deferred revenue expenditure or your fictitious assets. ठीक है, तो उसको भी हमको consider करना है. ठीक है, so now what to do? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल कैपिटल आ गया. Now क्या लेस करना पड़ेगा? net worth of the new firm. Net worth of the new firm. अब देखो क्या क्या आएगा उसमें? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. ए का कैपिटल कितना था? 3 लाख. ठीक है, तो क्या क्या आएगा? 3 लाख प्लस बी का कैपिटल कितना है? 2 लाख. ठीक है, प्लस रिजर्व का पैसा. रिजर्व का पैसा कितना है? रिजर्व है 70,000. 70,000 किसके लिए लिए हम लोग? 70,000 हैज बीन टेकन फॉर रिजर्व प्लस 50,000. 50,000 क्या चीज का पैसा है वो? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, योर माइनस यहाँ पर देखो एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है हमारा? एसेट में कितना है? 60,000. तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको कम करना पड़ेगा. सो माइनस रुपीज 60,000. दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल. ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल इंक्लूडिंग माइनस 20,000. सो गुडविल एंड योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. सो ये ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है. माइनस 20,000 एज योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. तो कहने का मतलब है टोटल कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस फिक्टिटियस एसेट्स और योर माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल. ठीक है, उसको कैलकुलेशन करेंगे. सो दैट विल बी हाउ मच? दिस विल बी रुपीज 5,40,000. ओके, उसके बाद क्या क्या हमको करना है? कैपिटल ऑफ सी. सी का कैपिटल को भी ऐड करना पड़ेगा. सो कैपिटल ऑफ सी, दिस इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. नेट वर्थ हो गया. सी का कैपिटल कितना था? 3,20,000. सो 5,40,000 प्लस 3,20,000. ओके, सो हाउ मच विल बी द योर अमाउंट? 8,60,000. ठीक है, नाउ यू सी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है हम लोग का? 12,80,000. उसमें से हम क्या लेस करेंगे? नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म. नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म कितना आया? 8,60,000. ओके, सो हाउ मच विल द डिफरेंस फिगर? 12,80,000 minus 8,60,000. This will be 4,20,000. Okay, so this is the what? This is the goodwill of the firm. ये जो आएगा वो क्या आएगा? Goodwill of firm. Now we are required to calculate the C share of goodwill. So C share of goodwill
C share would be how much? 1/4. So 1/4 into 4,20,000. कितना देगा ये? 1,05,000. Okay. So this is the amount of goodwill which has to be brought in by C. Now we are required to pass the journal entry for treatment of goodwill. So journal entry, you see, draw the format of journal. Particular, LF column, debit amount and credit amount. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गुडविल जो एग्जिस्ट कर रहा था बुक ऑफ द फर्म, उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे. एंट्री क्या होता था हमारा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी. सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. ठीक है, गुडविल कितना है हम लोग का, गुडविल 60,000. दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो. कितना दिया है, 2:1. कितना कितना आएगा, एक का 40,000 आएगा, दूसरा का कितना आएगा, 20,000. डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, बीइंग क्या, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:1. ओके, नाउ फॉर द हिडन गुडविल सी का शेयर कितना हम कैलकुलेट किया, 1,05,000. तो सी हैज नॉट ब्रॉट इन, सी का करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा. तो एंट्री वुड बी सी करंट अकाउंट डेबिटेड, सी करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड हाउ मच, योर 1,05,000. सो 1,05,000 किसको मिलेगा, ए और बी को. सो टू ए कैपिटल अकाउंट, अगेन टू बी कैपिटल अकाउंट. कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग का, 2:1 में. तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कितना कितना आएगा हम लोग का, 70,000 एंड 35,000. 70,000 एंड 35,000. नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Sacrificing ratio, as I have repeated, if nothing has been given, old ratio will be considered as your sacrificing ratio. Okay, so this is how we are required to calculate the amount of goodwill. So first of all, capital account would be considered, including your accumulated profit. तो जिसके बाद जाके जो existing goodwill plus हम लोग का fictitious assets होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. Okay, so that's all for today. Thank you.